Hello everyone, good evening. Again, I've come up with another question and we are going to discuss each and every question that's been asked in 2025 UPSC mains examination. In this session, we are going to discuss another question from GS4 and it's absolutely crazy. It's a favorite theme of mine and we're going to discuss that in an appropriate and holistic manner out there. So what's the question? It's a question that's been asked in the section A of ethics. Section A of ethics. What it said? Value-based and compliance-based work culture. What suitable measures would you adopt in your workplace? As you can see, it's my favorite topic. When you talk about the work culture, when you talk about the exploitation that's been there in the work culture, when you talk about the all type of hazards, all type of exploitation, slavery that comes with the corporate culture, you can directly relate with that. If anyone of you have worked in corporate culture and you have been a salaried employee, you must have known that how exploitative is that, how exploitative culture is that, and you can even relate with that. It's a very basic thing. Even in the recent time, we have seen there has been a death of Annie, and the news spread all over the LinkedIn. She was just a 26-year-old CA. She got burdened and burnout in EY. She was working in EY company, Ernst & Young. It's a big four company, a taxation-based company. But because of the overburden, she committed suicide. This is nothing but a practice that is against humanitarian grounds. It's exploitation, rather. It's exploitation in the private sector. We're going to discuss various themes regarding what we call as exploitation that's been there in Indian corporate culture. Exploitation in Indian corporate culture. Okay. So let's figure out that what are the mechanisms that can ensure ethical work culture, that can ensure you that, okay, this is a particular ground on which we have to work, but at the same time, we need to keep a good balance of mental health and physical health, both for employers and for the employees. That's essential because see, if you're going to ensure a proper health for what we call as for employees and employees, it will drastically improve your productivity, especially on work front. So see this. It is said that for an ethical work culture, there must be a code of ethics. What sort of code of ethics is required in every organization? What would you ensure? Please be creative on this. Please bring out something new ideas because it's rewarding. Creativity will be rewarded in examination. Normalization won't help you to get that many marks. Won't help you. So let's see. What are the measures to ensure ethical work culture? First, we need a proper code of ethics and transparency. Proper code of ethics. See, there has been a lot of things such as insider trading. All these are the malpractices or what you say manipulation of share prices out there. But clear guidelines need to be there and it should be followed. It should be transparent. It should be, I would say, flexible enough. Allow employers and employees to be more creative rather than what we called as a machinery-based thinking. Machinery-based thinking. Instead of that, we need a creative based thinking, and for that you require flexible rules. You don't require too much of rigid rules out there. Otherwise, what will happen? The rigid rules will turn your thinking process into very mechanical system. But you need creativity because that's rewarding in long term. So we need what we call as a creative based thinking. Creative based thinking. Okay, creative based thinking. Now look at this case example. You can of course give lot of emphasis on that. Hi Abhishek, you can give lot of emphasis on that. Satyam scam was there, highlighted how lack of ethical monitoring led to a massive fraud, stressing need for transparency. Whistleblower protection, we need ethical code of conduct for whistleblowing, for Whistleblower Protection Act. For whistleblower, there has been an act that does that, but is it implemented that well in an organization? That has its question. I have my reserves on this, whether the Whistleblower Act has been implemented very successfully in a corporate or not. We need that.
Infosys whistleblower complaints on corporate governance showed the importance of safe reporting channels. We need to protect that. Otherwise, what's the point? If some malpractice has been going on in the corporate culture and no one will display that and no one will come out with a new sense how it's been doing all these sort of malpractices, it will ruin our what we call as a work culture. So we need to protect these whistleblowers. Otherwise, what will happen? The malpractices, the problem of malpractices will get amplified. These are certain practices that you can mention, of course, with examples out there. Let's move forward. Training and sensitization. As you can see, sir, we have been raised in a platform or in a society that is patriarchal in nature. Patriarchal in nature. That means we always downgrade women. See, it's an ego clash as well. If I'll see some woman that's been rising in a corporate ladders and become a CEO, and I'm still an employee and normal associate out there, it will definitely hurt my ego. Why? Because I'm coming from a patriarchal society where men are considered to be a more bread earners and women are considered to be what we call as a caretakers of the society. So it will be lead to ego clash. But what we need training and sensitization. Oh, look, we need a good training. We need to understand that women are also equal partners. They are colleagues out there. So this stance need to be understand. Okay, this is a competitor. What we call as a very healthy competition that needs to be addressed and understand. This is how you can show your compliance. Okay, look, this is the things that we need to ensure what we called as ethical work culture. There must be code of ethics in place of agriculture. What is the code of ethics that need to be involved? First, again, POSH Act. POSH Act need to be implemented to its core. That is prevention of sexual harassment. That is prevention of sexual harassment Act. As you can see, there has been a lot of cases that's been coming out in the open. A sexual harassment act on women, a body shaming that's been going in the organization. All these things need to be addressed because again, that's a crime. If you body shame some woman out there based on her looks, that's critically a crime out there. Women can register an FIR under this act on anyone who body shames her. That's a serious issue that need to be addressed in the work culture, that need to be addressed in the society, that need to be addressed, and that need to be addressed. This question need to be raised in even international forum as well. It's a serious issue. It's a damn serious issue. So these are certain things that you need to address. Again, what else? Ethical work culture thrives when both compliance mechanisms and value-based approaches. Leadership. We need a proper leadership. We don't need rule-based leaders. Who show up every morning and say, hey, look, I have come up with a new rule. You have to follow this. That's completely rubbish, pathetic. He's not even a leader out there. He's just a person who wants to extract respect. Otherwise, there is no point of putting rules every day. There is no point on that. We don't need rule-based leaders. We need flexible, friendly, creative leader. These sort of managers thrive in this postmodern society. Look at the what we call as a temperament of Gen Z. They won't listen to you. If you don't give respect to them. They don't care whether you are MD or you are CEO or CFO. Don't care who you are. Don't give a damn about anything else. If you're gonna give respect, you will get that. Otherwise, trust me, forget about that. That's how we create things. Leadership. We need transparency. What's been going on? Involve every other person out there in the meeting. That what's been going on. Tell them what you're thinking. What's the long-term plan for the organization? How will you extract the confidence of employees? How will you do that? It's not going to happen anytime soon. Okay. This balance needs to be there. In order to succeed in long run.
So again, let's say what kind of exploitative practices that's being practiced in employer-employee setting or in a work organization or a cultural organization. These are gig workers exploitation. Food delivery boys, cab drivers, all these are being mistreated right now. All are being mistreated. They are being, I would say, exploited heavily to some extent. Exploited to some extent. Overwork, toxic work culture, contractualization and job insecurity, hire and fire culture that's been going on in Indian startup. That's been going on in Indian startup. All these are nothing but a toll on mental health. A toll on mental health. A toll on mental health. You need certain amount of security. You need certain amount of what we call as a confidence. You need certain amount of appreciation out there that appreciates your work. You need certain increment in your salary on regular intervals, of course, because you're getting used to that. You're working for that. You have given your best shot. Still, if you're not getting too much of money out there, that's complete exploitation. You're doing that, okay? So these things need to be addressed. Again, there has been a suppression of unions, collective bargain has been there. See, there has been a lot of what we call as a corporate diplomacy going on. A corporate talks has been going on. Corporate politics, you must have heard the term about that. It's too much. It's too much. Everyone thinks, okay, he's my competitor. Let's put my foot on his mouth and move forward with that. But that's not going to happen. On a longer run, it will toll you. It will burn out you. It will burn out you. That's simple. So what we need, three things. In a corporate setting, we need three things: security, stability, increment, and of course, along with that, recognition of your work. Along with that, your recognition of work. I hope that's pretty much clear for you. Okay. Wage inequality has been there, bonded labor, all of these things, exploitation of interns, freshers, layoffs, hire and fire practices, all these are things that's been going on. All are the things that's been going on. I hope that's pretty much clear for you. I hope that's pretty much clear for. These are the things that you have to mention in this particular question in order to extract half extra mark from your competitor. As soon as you will present a different kind of examples, creative examples out there, you're going to get rewarded for that. You're going to get rewarded for that. I hope that's pretty much clear for you. Now, I'm going to present certain amount of things in Hindi as well and bilingual language as well, because those who won't be able to understand complete English, that would be suitable for them as well. So let's begin with this on another thing. Just give me a moment. Now let's begin with this. So I've explained this in English, that what we have to do, we have to present a different examples out there. We have to present all these sort of what we called as exploitative practices that's been going on, and we need to address, we need to address certain amount of solutions for that. Corporate, see the question, what question demands? What's the demand of the question? What's the demand of the question? The demand of the question is that it is said that ethical work culture, there must be code of ethics in place of every organization to ensure value-based and compliance-based work culture. What suitable measures would you adopt? You will say, we need a proper code of ethics, we need a proper transparency, we need a future planning of the organization, we need to understand that what sort of things are being going on, we need to be taken into confidence, we need to be taken into a conference hall, we need to be appreciated, the work need to be appreciated, we need a continuous appraisal in our salary from time to time. These are the things that need to be addressed. Otherwise, how will you ensure that a proper work culture has been there in the India, which is still not. Let me give you an example. So let me rant a bit about, and this rant will go in Hindi. Let me tell you. सबसे पहले जब आप कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं तो आपको पता होता है कि look, there has been overtime. सबसे पहले overtime होता है. See, the point is simple. अगर आप ओवरटाइम की बात करें, see it's a rant out there. So I'm going to present that in a very formal language, informal language, so you will be able to understand what's been going on in the corporate culture at this moment, at this present time. Overtime. आप ओवरटाइम नहीं करवा सकते. सिंपली अगर आपका ऑफिस टाइमिंग 7 o'clock तक है तो 7:01 पे आपकी जिम्मेदारी नहीं है कॉर्पोरेट में रुकना. कोई भी अगर वो मीटिंग हो या ना हो, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता. ऑफिशियल टर्म्स में आप 7 बजे निकले क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी है. सेकंड,
आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता टाइम टू टाइम, दैट्स कंप्लीटली अगेंस्ट द रिवॉर्ड ऑफ वर्क। रिवॉर्ड आप कैसे करेंगे कॉर्पोरेट में सेटिंग में, एथिक्स कैसे अप्लाई करेंगे, जब उसे आप रिवॉर्ड करेंगे, रिवॉर्ड इन द सेंस मॉनेटरी रिवॉर्ड, आप उसे एक कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि यार ओके योर वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, इट्स यू आर डूइंग रियली वेल, इसके बदले हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, मॉनेटरी कंपनसेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड सर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। द सिंपल टर्म्स इज क्लियर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। आप एक के साथ बात करें, फिर आप दूसरे के साथ बात करें, इतने सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन चैनल्स को आप अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो सबके साथ बात करें ताकि क्लियर कम्युनिकेशन रहे और कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ना कर पाए। सर दूसरी बात यह है, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि भाई ज्यादा काम करवाया जाता है, इवन यू हैव बीन कॉल्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज टू द ऑफिस, अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीटली यूजलेस एक्टिविटी। आपको बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है पता नहीं, काम ज्यादा करने के लिए, बट सर ये अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी एंड एथिक्स है। कैसे? आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपको संडे बुलाया जाता, फिर यू हैव बीन सेड ओके यार थैंक यू, यू आर द वैल्यूएबल एम्प्लॉय आउट देयर। कैसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय? हम ज्यादा काम कर रहे हैं इसलिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय। जिस दिन हमारा वर्क कल्चर थोड़ा या फिर वर्क बर्डन थोड़ा कम होता है, तब दूसरे लोग आ जाते हैं कि यार कैसे कर रहे हो आप। तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार आप इतना सारा काम सी वर्क इज लाइक दैट कि अगर कोई किसी को दिख जाए ना कॉर्पोरेट में कि आपका थोड़ा सा काम कम है, तब उनको अजीब सा ही लगता है कि यार ये कैसे बंदा फ्री बैठा है, और बर्डन डालो। अगेन द प्रॉब्लम इज विद व्हाट वी कॉल्ड एज अ लीडरशिप। लीडरशिप को बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए, लीडरशिप को रूल बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्रिएटिव बेस्ड होना चाहिए। आप हर रोज ऐसे नहीं कह सकते कि आज मैं नया रूल लेके आ गया हूं, दिस नीड्स टू बी फॉलोड। आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे कि आप रोज नया रूल लेके आ गए, दिस नीड्स टू बी फॉलोड। इट्स अ रूल बेस्ड सिस्टम, इट मेक्स द सिस्टम वेरी मैकेनिकल आउट देयर। यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव, यू नीड अ फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट कि आप ये भी कर सकते हो, देन आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। अदरवाइज क्या होगा, ये एक बर्डन बनता जाएगा जो एक टाइम पे ट्रिगर हो जाएगा। अगेन आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो, रिस्पेक्ट फॉर योर पीयर्स, रिस्पेक्ट फॉर योर कलीग्स आउट देयर। और वो कलीग की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ बॉडी शेमिंग, अवॉइड एनी what would you call it, double meaning jokes out there, because आपको अंडरस्टैंड करना है कि वहां पे फीमेल्स भी काम कर रही है, टू मेक थिंग्स वेरी कंफर्टेबल फॉर देम। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एड्रेस करनी है एट द सेम टाइम जब आप कॉर्पोरेट रन करते हैं। आपको बेसिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करनी है ना। वो कॉर्पोरेट कैसा कॉर्पोरेट होगा जब आपको बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, इवन अ गुड कॉफी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर कॉफी और चाय नहीं प्रॉपर टाइम में मिल रही, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान बहुत अच्छी चीजें आपको डिलीवर करेगा? वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होगी। फिर वो क्या करेगा, यार ठीक है जो काम मिल गया करके चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि मीडियोक्रिटी, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मीडियोक्रिटी हैज बिकम अ रूल ऑफ कॉर्पोरेट लैंड। आप अपना बेस्ट देना भी चाहो तो वर्क बर्डन इतना ज्यादा कि आप कहते हो यार चलो सस्ते में निकल जाते हैं, जो काम है करा निकल गए, क्योंकि काम ही इतना ज्यादा इसलिए निकल गए। ठीक है, इसके साथ काम निकल के चले गए। फिर आपको और क्या चाहिए? यहां पे चाहिए आपको थोड़ा कॉपरेशन विद योर पीयर्स में। अगेन मैंने बोला कि कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है कि जहां पे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के आप कह सकते हो दूसरों को हटा के आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट्स अगेन इररिलेवेंट। और क्या चीजें हैं सर? जैसे हमने लास्ट में हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे, कहां गए कि भाई ले ऑफ हायर एंड फायर, सारी प्रैक्टिस इसकी है कि हायर एंड फायर की प्रैक्टिस है। तभी आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी की लोग ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हायर एंड फायर यहां पे चलता ही रहता है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में पिछले महीने 4 लोग फायर हो गए, तो आपको पता चलेगा कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, कितना एक इंसान जो है मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है। अगर मेंटली वो फ्रस्ट्रेटेड है तो क्या वो अच्छा काम कर पाएगा? एग्जैक्टली नो, दैट्स एब्सोल्युटली नो, बिकॉज वहां पे उसको स्टेबिलिटी चाहिए, वहां पे उसको एक पीसफुल माइंड चाहिए। ही नीड्स अ प्रॉपर सेटिंग टू डिलीवर हिज और हर बेस्ट वर्क। ही नीड्स अ प्रॉपर स्टेबल एनवायरमेंट, अदरवाइज क्या होगा, ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हायर एंड फायर का कोई मतलब नहीं बनता। आपको लॉन्ग रन तो किसी को देना ही है, क्योंकि आप दोबारा से अगर कॉर्पोरेट किसी चीज को हायर करेगा तो अगेन कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा है।
फिर वो 1-2 महीना लेगा एडजस्टमेंट के लिए। इससे अच्छा पहले लोगों पे आप इन्वेस्ट करें, उनके साथ ही लॉन्ग रन पे चले, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये भी एक कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है। अगेन सर, वेज इनइक्वालिटी, मुझे ये भी समझ नहीं आता कि कोई जो बहुत काम कर रहा है उसकी 1-1 लाख रुपए सैलरी थी, कि कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसकी कम सैलरी थी। मतलब ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? ऑन व्हाट बेसिस यू आर डूइंग दैट? आपकी तो फ्लैट होनी चाहिए। अगर 4 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो मैं फ्लैट एक सीलिंग प्राइस लगा दूंगा, एक सीलिंग प्राइस लगा दूंगा कि भाई यही फ्लैट होना चाहिए, यही सैलरी होनी चाहिए सबकी, ना ऊपर ना ज्यादा, ताकि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ना हो, ताकि एक दूसरे के लिए हेट्रेड ना आए, ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन हो और टीम वर्क में आगे काम हो। ये सारी चीजें थी जो आपको डिलीवर करनी थी। बॉन्डेड लेबर, अब मैंने आपको कहा कि सर आपका अगर टाइमिंग 7 बजे तक है 10 से, तो 7 बजे तक ही है। 7-1 पे आपको कोई रोक नहीं देगा कि नहीं यार इनफॉर्मल मीटिंग है या फॉर्मल मीटिंग है। मीटिंग का मैं क्या करूं, घर भी तो जाना है लोगों को, और दूर जाना होता कैसे जाएगा? ठीक है। बॉन्डेड लेबर एंड डिस्गाइज एट अनएम्प्लॉयमेंट, आप किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते, आपका अपना काम है। संडे को आप नहीं बुला सकते, इफ इट्स ऑफ इट्स ऑफ। आपको तो एम्प्लॉय के साथ ज्यादा कॉपरेट करना चाहिए। अगर वो दूर से आ रहा है, अगर उसको ऑब्वियसली पता है कि बारिश हो रही है, तो आप कैसे उसके साथ कॉपरेट करेंगे? भाई प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी ओवर दैट, ये सारी चीजें आपको कॉपरेट को आपको बतानी चाहिए, अदरवाइज आपका कॉपरेट बहुत लंबे तक नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें थी जो कॉर्पोरेट एथिक्स के लिए थी, जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आपको आई होप पसंद आया होगा सेशन। 2-3 चीजें और बताता हूं। अगर कॉर्पोरेट को ऑब्वियसली पॉश एक्ट है, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, ये चीज को आपको कैसे रन करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स या उसकी लीडरशिप नहीं बनाती, उसके एम्प्लॉइज बनाते हैं। अगर एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड हैं तो वो अपना काम बेटर नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं आगे चलेगी। अगर आपको किसी कैजुअल लीव उठाने में 4 मेल करने पड़ रहे हैं, तो ट्रस्ट मी वो आपकी कैजुअल लीव कम और हेडेक ज्यादा बन जाता है। कैजुअल लीव और या सिक लीव उठाने के लिए आपको इतने सारे प्रोसेस बताने ही नहीं चाहिए। पॉइंट यही है कि भाई आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो बहुत सही चीज होती। ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, ये वाला सेशन पसंद आया होगा। इट्स नथिंग बट अ फ्रूटफुल डिस्कशन अबाउट हाउ थिंग्स नीड टू बी वर्क, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, a corporate will fall down like a deck of cards. It will fall down like a deck of cards. No one can save that in a long run. यही चीजें होनी चाहिए, टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अगेन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन अ लॉन्गर रन। अभी आपने रीसेंट न्यूज पढ़ी होगी कि चाइना में 10 डेज अनहैप्पी लीव बताई गई है, कि भाई अगर आप खुश नहीं हो तो आप 10 दिन की लीव ले सकते हो। दैट्स अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, कि आप 10 दिन की लीव ले सकते हो। अगर आप खुश नहीं हो तो आप यहां पे कॉर्पोरेट में आके काम कैसे करोगे? अनहैप्पी माइंड कांट ब्रिंग यू द ग्रेट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू नीड टू रिलैक्स, काम डाउन। डाउन फेसेस आते हैं, आप घर बैठिए, उसके बाद आप रीजॉइन करिए। पर कई कॉर्पोरेट्स में इंडिया में, क्योंकि अनरेगुलेटेड है, इट्स नॉट बीन रेगुलेटेड, यहां अगर किसी ने 10 दिन की छुट्टी ले ली तो पता चला 11 दिन हो गया कि आप फायर ही हो गए। अब फायर ही आपने कर दिया तो क्या वो बंदा लेगा? 10 दिन भी मर मर के जिएगा। तो यहां तो सारा दिन ही डिप्रेशन ही चली जा रहा है। दैट नीड्स टू बी एड्रेस। गवर्नमेंट को इसके लिए रूल लेके आने चाहिए। ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां पे पॉलिसी मेकिंग करे जो काम चल रहा है, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सेशन के साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर दिस इज योर क्वेश्चन ऑन GS4। मैं ऐसे ही और दूसरे क्वेश्चंस लाता रहूंगा। धन्यवाद।